हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ के बारे में। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाफ लाइफ से 2 या 3 क्वेश्चन आता है। हाफ लाइफ और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाफ लाइफ बेसिक्स। हाफ लाइफ एक्चुअली क्या होता है? हाफ लाइफ, और इसको टी हाफ भी बुलाया जाता है, इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डीके. It is a fixed property of every radionuclide. It is not affected by temperature. It is not affected by pressure. It is not affected by chemical reactions. Radioactive decay is a spontaneous and random process. After one half-life, 50% radioactivity remains. After two half-lives, 25% activity remains. After 3 half-lives, 12.5% activity remains. After 4 half-lives, 6.25% activity remains. Type of half-life: physical half-life, the time for radioactive decay only. Biological half-life, time for the body to eliminate 50% of the radio tracer. Effective half-life, combination of physical and biological half-life. Effective half-life is always shorter than the physical half-life. Effective half-life determines the patient radiation dose. Next, physical half-life of some important radionuclides. फर्स्ट, टेक्नीशियन 99M, इसका हाफ लाइफ होता है 6 आवर्स। ये यूज़ होता है बोन स्कैन में, रेनल स्कैन, हीडा स्कैन, कार्डियक स्पेक्ट में। स्पेक्ट का फुल फॉर्म होता है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। मोलिब्डेनम 99, इसका हाफ लाइफ होता है 66 आवर्स। पेरेंट आइसोटोप ऑफ टेक्नीशियन 99M, जो टेक्नीशियन 99M ये बना जाता है मोलिब्डेनम 99 से। F18, इसका हाफ लाइफ होता है 110 मिनट्स व 110 मिनट्स। ये यूज़ होता है FDG पेट स्कैन में। गैलियम 68, इसका हाफ लाइफ होता है 68 मिनट्स। ये यूज़ होता है PSMA पेट में, डोटाटेड पेट में। C11, इसका हाफ लाइफ होता है 20.4 मिनट्स। ये यूज़ होता है पेट रिसर्च स्टडी में। N13, हाफ लाइफ 10 मिनट्स, यूज्ड फॉर मायोकार्डियल परफ्यूजन पेट स्कैन। O15, हाफ लाइफ 2 मिनट्स, ये यूज़ होता है ब्रेन एंड कार्डियक पेट में। RB82, हाफ लाइफ 75 सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर कार्डियक पेट स्कैन। Iodine 123, half life is 13.2 hours. It is used for thyroid imaging. Iodine 131, half life होता है 8 days. Iodine 131 used for thyroid cancer, hyperthyroidism therapy. Next, Iodine 125, 59.4 days अप्लाई होता है। ये यूज़ होता है ब्राकीथेरेपी में। एलन 111, इसका हाफ लाइफ होता है 2.8 डेज। ये यूज़ होता है वाइट ब्लड सेल स्कैन में। TI201, हाफ लाइफ 73 आवर्स, यूज्ड फॉर मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। Xenon 133, हाफ लाइफ 5.3 डेज, लंग वेंटिलेशन स्टडी में यूज़ होता है। KR81M, हाफ लाइफ 13 सेकेंड, यूज फॉर लंग वेंटिलेशन इमेजिंग। ALU 177, हाफ लाइफ 6.7 डेज, यूज फॉर टारगेटेड रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी।
Yttrium-90, half-life 64 hours, used for radioembolism and therapy. SM-153, half-life 46.3 hours, used for bone pain palliation. RA or Radium-223, half-life 11.4 days, used for bone metastasis treatment. Cobalt-57, half-life 272 days, used for calibration source. Technetium-99m is most commonly used diagnostic radionuclide. F-18 is most common PET radionuclide. Iodine-131 emits both beta and gamma radiation. Iodine-123 emits gamma radiation only. Lu-177 is a beta-emitting therapeutic radionuclide. Yttrium-90 is a pure beta emitter. Radium-223 is a alpha emitter. PET or positron emission tomography uses positron emitting radionuclide. SPECT uses gamma emitting radionuclide. MO99 or Technetium-99m generator is called radionuclide generator. Freshly eluted Technetium-99m has maximum activity. Short half-life reduces patient radiation dose. Long half-life preferred for therapeutic radionuclide. Half-life is measured in seconds, minutes, hours or days. Radioactivity is measured in becquerel or BQ. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. FDG or this is used for PET imaging. FDG stands for fluorodeoxyglucose. FDG accumulates in tissues with high glucose metabolism.